Namaskar, welcome back once again into another presentation of learning Hindi pronunciation. And in this presentation, again, I have 5 different words, and those are adjectives. And this will help you getting new words. Also, you'll also get like new vocabulary information, and you'll also learn how to pronounce it. And I think some examples will definitely add your skills. Right? Eccentric, we say sunki, sunki, sunki. All right, sunki. ये लड़का कितना सनकी है, बहुत गुस्सा आता है तेरे को, है लाइक ये लड़का बहुत सनकी है, बहुत गुस्सा आता है तेरे को. हाँ, हाउ मच एंगर यू गेट, हाउ इजीली यू गेट एंग्री, लाइक दैट, कितना गुस्सा आता है, हाउ मच एंग्री यू गेट इट, हाउ मच एंग्री मैन यू आर, समथिंग लाइक दैट इट मीन्स, राइट. सो बहुत गुस्सा आता है तेरे को, हाँ, बहुत गुस्सा आता है तेरे को. गुस्सा मीन्स एंगर, सो सनकी, you just say a little things and the guy get occasionally very angry, something like that, sunki. Even for the small reason, start quarreling, start fighting. Sunki, sunki, sunki. Entertaining, manoranjak, manoranjak. All right, man means heart, all right, ranjan means fun, so like happy things, so the things that makes your man very happy, it's called manoranjak. Manoranjak, ranjan is something, happy things, like enchanting thing, like that, something. So manoranjak, manoranjak, mano and then ranjak, right? And fast it will be manoranjak, manoranjak. Better, I will suggest you go with the Devanagari script, that will be more better. So manoranjak, manoranjak. Anil बहुत मनोरंजक है, अनिल बहुत मनोरंजक लड़का है. और you can say, अरे कल की फिल्म बहुत मनोरंजक था, कल की फिल्म बहुत मनोरंजक था. Yesterday's film, I mean that the film that we watched yesterday was very very entertaining. All right, so Hindi learning is quite entertaining. So हिंदी सीखना काफ़ी मनोरंजक है, हिंदी सीखना काफ़ी मनोरंजक है. काफ़ी means so much. Right, so हिंदी पढ़ना, हिंदी सीखना काफ़ी मनोरंजक है. Next one is excellent, बढ़िया. बढ़िया, excellent. आप बहुत अच्छी तरीके से हिंदी सीख रहे हैं, लाइक बहुत अच्छी तरीके से, यू आर लर्निंग वेरी नाइसली हिंदी. सो इन दैट टाइम आई कैन से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम, वेरी वेरी एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, बढ़िया, राइट, बढ़िया, बढ़िया. इट्स नॉट, डोंट प्रोनाउंस लाइक इट्स धी साउंड, और नीदर इट प्रोनाउंसेस लाइक धी साउंड, राइट, नॉट धी, नॉट neither it's D sound, neither it's dhi sound, right? Dhi and dhi, two different dh sound, because here is a dot sound. So once there is a dot, you have to slightly add little r. Badhiya, 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 right? Badhiya, bahut badhiya, bahut badhiya, bahut badhiya, badhiya, badhiya. You should feel little r there, right? Bahut badhiya, right? So it's bahut badhiya, badhiya. Excited, we say uttejit, uttejit, right? Utte will be one, and then jit will be one. So in two time you have to pronounce this. Uttejit, uttejit, utte, utte, right? Uttejit. Sorry, 3. I'm not a Hindi professor of like pronunciation expert or something. I just speak. I mean, people speak and in the same way I'm trying to represent you, right? So I may be like not perfect at once, but I will tell you how people speaks in daily life conversation. So uttejit, uttejit, right? Uttejit, right? Utte, te, and then jit. Uttejit, uttejit means excited. अरे इतना उत्तेजित क्यों हो रहा है हिंदी पढ़ाने के लिए, इतना उत्तेजित क्यों हो रहा है हिंदी पढ़ाने के लिए? Why are you so excited to teach Hindi? Or I can ask, why are you so excited to learn Hindi? हिंदी पढ़ने के लिए इतना उत्तेजित क्यों है? ओ मेरे दोस्त, इतना उत्तेजित क्यों है? हिंदी सीखना है ना तेरे को, आई विल टीच यू, मैं पढ़ाऊंगा. हिंदी सीखना है ना तेरे को, यू हैव टू लर्न हिंदी ना, आई विल टीच यू. व्हाई यू आर सो एक्साइटेड? इतना उत्तेजित क्यों है? इतना उत्तेजित क्यों है? एक्साइटिंग, राइट, व्हिच मेक्स यू एक्साइट, राइट, दैट इज कॉल्ड उत्तेजक. उत्तेजक व्हिच एक्साइट यू. अनिल की हिंदी क्लास काफी उत्तेजक है, अनिल की हिंदी क्लास काफी उत्तेजक है, लाइक अनिल्स हिंदी क्लासेस आर वेरी एक्साइटिंग, राइट. मेरी नई नौकरी बहुत उत्तेजक है, मेरी नई नौकरी बहुत उत्तेजक है, लाइक माई न्यू जॉब इज वेरी एक्साइटिंग. मेरी
नई नौकरी, काफी उत्तेजक है, you can also say, बहुत उत्तेजक है, you can say, everything you can say, anything you can say, right? So you can remember it. मेरी नई नौकरी, remember that. मेरी, री represents feminine form. नौकरी, नौकरी, so see, नौकरी is a feminine word, e, that is why मेरी, not मेरा नौकरी, not मेरे नौकरी, alright? So मेरी नौकरी, हमारी नौकरी, तुम्हारी नौकरी, उसकी नौकरी, हम लोगों की नौकरी. So की नौकरी, see the sequence, right? We're gonna learn a lot of things simultaneously. All right, so that's it for this 5th presentation, and I will see you in the next 6th presentation, learning some Hindi pronunciation. Until the time, don't forget to catch me on Facebook, Twitter, Google Plus. Subscribe this channel. I'm on Twitter and Pinterest also, and I'll see you in the next video. Bye bye. And please, if you like my videos, please, why don't you share it? Other people may be interested in learning Hindi, right? Alright, so